नमस्ते। सोरिंग सोल्स विद विशाखा सिंघानिया के एपिसोड 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मुझे बहुत गर्व और खुशी महसूस हो रही है क्योंकि आज की हमारी मेहमान न केवल प्रेरक है पर वे मेरी बहुत अच्छी मित्र भी है। A hearty welcome to you, dear Chaya. Thank you, Vishaka, and thank you very much for having me in your podcast. छाया, क्या हमने सोचा था कि कभी एक साथ हम इस तरह से पॉडकास्ट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं. It really But this fills up. just came like a surprise, and I'm Yes. enjoying. It fills me up with excitement and so much pleasure. And I would like to take this moment to thank you for your presence here on the podcast and also for being such a dear friend. So, Chaya, अपनी बातों की श्रृंखला जारी करने के पहले मैं दर्शकों को आपका परिचय देना चाहूंगी। बैंगलोर शहर में जन्मी और पली बड़ी छाया मिश्रा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रहती हैं। छाया मिश्रा एक होलिस्टिक न्यूट्रिशनिस्ट, क्लिनिकल डाइटिशियन और माइंडसेट कोच है। इन्होंने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च और भाभा एटॉमिक सेंटर जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया है। छाया ने न्यूट्रिशनल साइंसेज में मास्टर्स किया। वे इंटरनेशनल ओबेसिटी कांग्रेस फिलाडेल्फिया में वक्ता रह चुकी हैं। हाई बीपी और हाई कोलेस्ट्रॉल स्तर को उलटने के लिए आहार संबंधी दृष्टिकोण में उनके राष्ट्रीय प्रकाशन हैं। छाया ने कई पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं के साथ काम किया है। वे विज्ञान और पोषण की कला के माध्यम से लोगों को मोटापा, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, लिवर डिजीजेस और पीसीओएस जैसी पुरानी और जीवन शैली संबंधी बीमारियों को रिवर्स करने में मदद करती हैं। छाया एक हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में एबीपी गंगा और इंडिया अहेड जैसे नेशनल न्यूज चैनल में शामिल रह चुकी हैं। अपने वेबसाइट न्यूट्री हैप्स के जरिए छाया ने न केवल इंडिया में अपनी क्लाइंटेज बनाई पर इनकी वर्ल्ड वाइड क्लाइंटेज है। That is so amazing, Chaya. More power to you. Thank you for that warm introduction, Vishaka. And it's my pleasure to be with you and sharing whatever I have for you. Yeah. Yes, I'm sure that, there'll be so much for the viewers, through this discussion of ours. So let us begin our formal discussion. Yes. So, Chaya, आप एक क्लिनिकल डाइटिशियन हैं और पोषण एवं आहार में आपको बचपन से ही रुचि रही है। सो ये रुचि आपने कैसे जागृत हुई? ये रुचि से भी ज्यादा मेरे लिए तो मजबूरी थी, क्योंकि बचपन में मैं बहुत बीमार रहती थी। मतलब मेरे भाई बहन जो है तो डॉक्टर के पास गए तो मेरा तो हर महीना हाजिरी रहता था डॉक्टर के पास, बिकॉज आई वाज सो इल, बिकॉज बार बार मुझे सर्दी जुकाम हो जाता था। टॉन्सिलाइटिस वाज वन मेजर प्रॉब्लम। तो जब भी डॉक्टर के पास जाए डॉक्टर खाना बंद कर देते थे, बोलते थे दूध या ब्रेड खाए, बाकी सब बंद। देन दवाइयाँ, तो एक तरफ तो खाना नहीं मिलता था जो पसंदीदा खाना रहता था, और दूसरी तरफ दवाइयाँ। तो दवा तो मुझे लेनी नहीं थी, जो मार खाई हूँ मैं घर पे इसी वजह से खाई हूँ कि ये दवा नहीं खाती है। दिमाग में हमेशा एज अ चाइल्ड ना मुझे ये लगता था ऐसा कुछ नहीं है कि खाना खा के हम ठीक हो जाए, ऐसे कुछ होना चाहिए, ऐसे मैं दिमाग में हमेशा सोचती थी एज अ चाइल्ड। बट लीस्ट डिड आई नो दैट आई वुड बिकम a nutritionist. Amazing. So I now understand that it was necessity that was the mother of invention for you. As a child यही थॉट रहता था कि खा के ठीक होना चाहिए, खाना खा के ठीक होना चाहिए. Lovely, very nice. So you've always been a very good student, Chaya, and you worked at Indian Council of Agricultural Research and also at Bhava Atomic Center, which is very, very prestigious. So what was it like to work at these institutions? Vishaka, I was very fortunate enough कि मैं बहुत ही छोटी उम्र में दो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिया के बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में मुझे काम करने का मौका मिला. Indian Council of Agriculture Research way back there in 99 or so, मुक्तेश्वर में था, तो बहुत दूर बैंगलोर से.
नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में. सो बट देन इट हैड इट्स ओन ऑरा एंड बड़े बड़े साइंटिस्ट वहाँ पे रिसर्च वर्क वहाँ पे होते थे. सो माई एसोसिएशन वॉज ऑल विद दीज स्कॉलरली पीपल एंड कलीग्स एंड फ्रेंड्स भी PhD स्कॉलर्स थे, यंग साइंटिस्ट थे. हम लोगों का एक बहुत ही अच्छा ग्रुप हुआ करता था एंड वर्किंग इन अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन लाइक दैट वाज डेफिनेटली अ बिग प्रिविलेज एंड आई लर्नड अ लॉट. So was it in बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. जब मैंने रेडियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट लिया ग्रेजुएशन में, तो दिमाग में ये था कि इट वाज लाइक ड्रीम टू इवन एंटर BARC, Yeah. ऐसा था. तो ऐसे में यू आर वन ऑफ द एम्प्लॉइज इन अ साइंटिफिक पोस्ट बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में. मतलब मुझे लगा था ओके, आई थिंक आई एम सॉर्टेड, माय ड्रीम कम ट्रू, मेरा ड्रीम जॉब है, व्हाट मोर डू आई वांट इन लाइफ. तो ये सिचुएशन थी एंड my experience there with my colleagues, my seniors, it was very, very enriching. And I've learned a lot from these two organizations. Okay, beautiful. No, but life had something very different for waiting for you. And इसी दौरान आपको आपका मनचाहा जीवन साथी मिला. And आपने शादी के बाद बाक जैसे prestigious institution which you were really enjoying working at, you decided to resign from there to shift to a small town in Uttar Pradesh, Prayagraj. So Chaya, it must have been unnerving and not very easy. So could you share your experiences with us? Yeah, sure, Vishaka. So हुआ ऐसे कि बहुत से लोग कई कारण से जॉब छोड़ते हैं. समटाइम्स वन ऑफ द मेन रीजंस इज दे डोंट एंजॉय द जॉब और कुछ दिक्कतें आती हैं जॉब में. तो जब मैंने छोड़ा, आई हैड जस्ट गॉट माय प्रमोशन इन द एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिस्ट. मतलब आई वाज प्रमोटेड and I was in the peak of my career at that point of time. The thing is, I had got married and I had a little child. So एक होता है ना, देखो शादी के बाद it's no longer about I, me, myself. It's about we, us, ours, है ना. तो खुद के साथ साथ बाकी लोगों का, परिवार के बारे में भी सोचना होता है. एंड यू लुक एट द वेल बीइंग ऑफ द फैमिली, है ना, उस हिसाब से देखते हैं. तो हुआ ऐसे, माय फादर इन लॉ हैड रिटायर्ड एंड माय मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ बॉम्बे में रहने आए हम लोगों के साथ. So we had a very settled life in Mumbai. तो मैंने ये देखा कि my mother-in-law was not very happy in the sense, देखिए यहाँ इलाहाबाद में एक अलग ही कल्चर है. It's an open house and हर थोड़ी दूर में आपके रिश्तेदार है, फ्रेंड्स है, और माँ यहाँ की पली बड़ी है. और बॉम्बे was like an alien city for her. तो उनको बहुत दिक्कत होती थी. आई यूज्ड टू सी कि सब सुख सुविधा होने के बाद भी माँ खुश नहीं है. सो व्हेन वी जस्ट स्पोक टू हर, शी जस्ट एक्सप्रेस्ड कि भाई जगह का फर्क है, लाइक शी वुड, इट टुक नियरली मेनी मंथ्स फॉर हर टू इवन गेट एडजस्टेड. तो ये हुआ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. माय हस्बैंड डिडंट वांट टू डू अ 9 to 4 जॉब. उनको हमेशा दिमाग में था कि हम प्रैक्टिस करेंगे. ही इज अ डॉक्टर. सो हमने सोचा कि अगर आपको प्रैक्टिस ही करना है तो व्हाई नॉट इन इलाहाबाद, कि आप वहां पे प्रैक्टिस करो, देन घर पे भी रहेंगे, माँ बाप जी भी वहां पे रहेंगे, तो सबके लिए इट्स अ विन विन सिचुएशन. मतलब हमारा बच्चा भी ग्रैंड पेरेंट्स के साथ पले बढ़ेगा, लाइक माँ विल ऑल्सो बी हैप्पी इन हर हाउस. तो ये सिचुएशन थी. बट द स्टेक वाज, आई हैड टू गिव अप माय जॉब. मुझे अपना Absolutely, that's what I was wondering. It was a win-win situation for everybody, but yeah, it wasn't exactly a win-win situation for you, Chaya, because you really didn't know at that point of time what your future held for you. And a girl who had always been in a city all through her life, moving to a small town, that too in a joint family. So yes. it must not have been an easy decision. हाँ, क्योंकि डिसीजन तो ले लिया, फिर पहुंचने यहाँ लौटने के बाद समझ में आया, सारी दिक्कतें दिखने लगी. सबसे बड़ी चीज ये था कि देयर वाज अ ह्यूज कल्चरल डिफरेंस, है ना, फ्रॉम अ सुपर इंडिपेंडेंट गर्ल फ्रॉम अ वेरी लिबरेटेड सिटी लाइक मुंबई से एक वार्म येट एन ऑर्थोडॉक्स सिटी, आई वुड से इलाहाबाद. एंड कल्चर भी थोड़ा ऐसा ही था. क्योंकि वे बैक, इट्स ऑलमोस्ट 18 years नाउ आई शिफ्टेड. तो उस समय ये भी रहता था कि भाई अकेली मत जाओ बेटा, यू टेक समबडी अलोंग विद यू, इट यूज्ड टू बी लाइक दैट.
एंड सबसे बड़ी बात ये है ना, एक वेल सेटल लाइफ, एक फाइनेंशियल इनकम भी आपकी आ रही है, एवरीथिंग इज सेटल्ड से देन यू आर होल्डिंग अ पोस्ट. वहां पे कोई आता था तो छाया के पेरेंट्स, छाया के इन लॉज, यू नो, फ्रॉम देयर टू आई कम टू अ प्लेस वेयर आई न्यू नन हियर. है ना, मेरे लिए सिटी नई थी और मैं सिर्फ मिश्रा जी की बहू, परितोष की बीवी और राघव की मम्मी बन के रह गई. एंड एक अजीब सा आइडेंटिटी क्राइसिस हुई, बहुत ज्यादा ये हुई. बट फॉर मी आई हैड लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे आया मुझे घर संभालना पड़ा, फ्रॉम अ न्यूक्लियर फैमिली टू अ जॉइंट फैमिली ऑफ 8. और यहाँ पे कुकिंग भी घर वाले ही करते थे, यू नो, लाइक देयर वाज नो हेल्प इन द किचन. एंड टेकिंग केयर ऑफ द लिटिल बॉय, यू नो, 2-2.5 साल का था बच्चा. एंड व्हेन वी केम हियर माय मदर इन लॉ फेल इल. इनफैक्ट उनको कैंसर हो गया, तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ा अलॉन्ग विद अदर्स इन द फैमिली. तो सडनली, यू नो, मैं हाउस होल्ड के उसमें कुछ नहीं कर रही थी. आई वॉज समबडी हु नेवर वेंट इनटू द किचन बिफोर मैरिज. तो सडनली यू आर कुकिंग फॉर एवरीबडी, तरह तरह के खाने बन रहे हैं, यहाँ का खान पान भी अलग है. एंड taking care of the household, little child, elderly in the family was very, very challenging, because this was something I never did in life. In fact, I used to dread doing all of these things. So life was really difficult. बट ये हुआ कि आई ऑनर्ड माई डिसीजन, मैंने ये लिया है तो लेट मी गो थ्रू क्या क्या, यू नो, आई हैव इन स्टोर फॉर मी. एंड मैं चीजें सीखती गई एंड करती गई. एंड दैट इज व्हेन आई गॉट अनदर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कि ये सारा काम तो मैं कभी सोची नहीं थी मैं कर पाऊंगी, मैं करती गई. तो दैट गेव अ लॉट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस. So the journey was difficult, but it taught me a lot of things. It made me understand what life is, understanding the intricacies of relationship in the family, taking care of elders, what is giving, you know, like आप जिस पोजीशन में थे वहां से बहुत नीचे जाके फिर आपको सारा काम करना पड़ रहा था. You restarted your journey in a way. Yes, yes. Started from zero all over again. Started from scratch. So, two things which you just mentioned, Chaya, it really touched my heart. You said that, you know, when you get married, it is more about we than I. You know, if I think a girl thinks like this, so then the universe automatically takes care of her life. And also these days, Chaya, we see that, you know, girls are running so much after job and money. It is always very nice to have a job and money, but somehow, you know, we as a society, we've created a disbalance between work and family life, which is uprooting family life in so many ways, you know. So I think your life is a perfect example to the young women out there, you know, who think that lady cannot have it both. So you show that, you know, you can have a very good family life also, taking care of the household chores, plus you can have your own independent work life also. Yeah, this Very again goes back inspiring, to Chaya. my childhood thought. मैं हमेशा सोचती थी I could never buy this, you know. You can't have the cake and eat it too. मैं सोचती थी why not? What's the fun in that? If I can't eat, what's the fun in having? You know, मुझे लगता था नहीं, दोनों होनी चाहिए. So similarly, I think you know, I wouldn't say a balance, but definitely a harmony between, you know, work and responsibility, household is equally important. And of course, it takes a lot of effort, no doubt about it. Needless to mention, I mean, it wouldn't have been a cakewalk, you know. It must have required like a lot of effort from your side to have it both, Chaya. That's true, because there was a huge cultural difference. Yeah. Huge cultural. So Chaya, you learn to. I know you. I know that, you know, you are very adept at managing your household. तो जब आपने ये सब कुछ सीख लिया, you had an identity crisis, you know, because you, the independent girl, you had carved your own niche for yourself, and यहाँ पे कुछ भी नहीं था. So what did you then do? So Vishaka, at this point na, identity crisis से निकल के I was having a different identity, because now I was a good bahu, good wife, good mother, managing everything. So it was easy for me to settle with that, है ना, कि attention वहाँ उस चीज में भी मिल रही थी. But then there was something inside me that was suffocating, you know. मुझे लगा, you know, my life, my knowledge, my energy, it should not be restricted to the house and that, you know, handful of family members. So it should go beyond. And I think somewhere when I was taking care of my mother-in-law,
intuitively I got to know that there was something that was not going right, जो हम खाने के थ्रू ठीक कर सकते थे. There was lack of knowledge, lack of information. तो प्लस मैं ये भी सोच रही थी इसके बाद क्या, when the child grows up, what's next, what am I, अभी तो इसमें मैं मास्टर हो गई थी, I knew to manage all of these things. What's next, where will I spend that energy? So that is when I could see something close to, because having worked in BARC, मुझे और कोई छोटी चीज में सेटल नहीं होना था. So I upskilled myself. When I saw मेरे qualification के साथ क्या चीज और match होगी, I thought let me upskill myself. I gave entrance for the masters nutritional science में. I cracked. Now Awesome. biggest challenge is कि how am I going to do it? अब हो तो गया, ऐसे चलो कर लेते हैं. So in the first 6 months of my master degrees, first semester में at least 3 बार मैंने सोचा I can't do it, I'll quit. So, was it full-time masters or part-time masters? Oh yeah, it was a 2 years MSc masters. 9 to 4 मैं college में wow. Yeah. So before that, fetching my son 6:55 पे उसका school होता था. उसका टिफिन, उसका ब्रेकफास्ट, घर वालों के लिए ब्रेकफास्ट, लंच सब बना के I used to go to the university. एंड कोई दिन खाना नहीं बना तो लौट के आती थी, खाना बना के खिला के फिर चले जाते थे. देन 4:30 पे गेट पे मुझे मेरा बेटा मिल जाता था. दिस बॉय इज वेरी नॉटी, टेक केयर ऑफ हिम. So while your son was learning ABC at school, you were learning vitamin ABC. Oh yes. And he at some point उसने पूछा भी, मम्मा आप ही ABCD पढ़ रही हो, that PowerPoint पे vitamin A लिखा था. He was very happy कि ये भी पढ़ रही है. Yes. So on a serious note, Chaya, I mean 9 to 4 at the university is a big deal. Like when you have a family, उसके बाद आपको पढ़ने का टाइम कैसे मिलता था? वो बिल्कुल भी नहीं मिलता था. इनफैक्ट आते ही फिर सबके लिए चाय, फिर बच्चे को स्केटिंग के लिए लेके जाते थे या फिर स्विमिंग के लिए लेके जाते थे, फिर लेके आके उसका होमवर्क कराना, देन घर के लिए खाना बनाना. बाय द टाइम आई वुड फिनिश ऑल माय वर्क 10:30, ऑन माय टोज, एट नाइट. तो एनर्जी ही नहीं बचती थी, है ना. तो सोचते थे कब पढ़ूं, मतलब थके हुए शरीर में you can't sit and concentrate on your studies. Yes. I think my saving grace was I used to attend all the classes, practicals attend करती थी, very sincerely attend करती थी, और थोड़ा बहुत भी जो पढ़ती थी ना, मुझे नॉवेल की तरह मैं पढ़ लेती थी एंड मेरे दिमाग में आ जाता था. It was also I think thanks to the kind of foundation education I had in Bangalore. And फिर ये भी होता है ना, क्राइसिस में you really thrive. Yeah, you know that you only have this much time, so you're subconsciously you make the best of it. Very true. And that really happened with me. And there were a lot of people in the line who helped me out. Like I remember one of my lecturers telling me कि छाया, आप थकी रहोगी ना, एक रोटी एक्स्ट्रा बना लोगी पर पढ़ नहीं पाओगी. Then I realized I need to take care of myself. थोड़ा सा मुझे रेस्ट करके I need to focus on study as well. But then after the first semester, जब मैं 80% देखी अपना मार्क्स, मैंने कहा और 1.5 साल खींच लूं ऐसे, at least I will be qualified to do something. So that motivated me to go ahead. चलो इतना तो कर ही चुके हैं, let's complete. So super. Anyway, very do nice. It anyway वाली बात थी. And after you finished your masters, Chaya, I know that there has been no looking back for you. उसके बाद आपको भी शायद नहीं पता होगा how you kept on progressing and progressing. You worked with the likes of so many Padma Shri awardees, you got a chance to learn from them until you finally launched your NutriHabs. So would you tell us more about what NutriHabs exactly is? Yeah, Vishaka, when I completed my post-graduation, जब हम research work कर रहे थे, उस समय I had taken this clinical trial where I had enrolled a lot of patients from different well-known gynecologists here in the city. तो जब उनके पेशेंट्स में लोगों ने देखा, क्लिनिशियंस ने देखा फायदे हो रहे हैं, उनका बीपी बढ़ नहीं रहा है, बल्कि कुछ दवाइयाँ कम करनी पड़ रही हैं क्योंकि this person is taking this kind of a diet, then that was also a turning point for the city in this fraternity. कि लोगों को लगा हाँ वाकई में डाइट काम करता है. So उसी दौरान there were clients who were happy with the treatment I was giving, diet therapy, then they wanted to consult me one-on-one. So practice happened to me, उसी के दौरान. So
एक को ठीक किया तो उन्होंने और एक और को बताया, तो ऐसे करते करते Hmm. बाय वर्ड ऑफ माउथ देन ओबेसिटी की काफी लोग आने लगे एंड उससे रिलेटेड काफी कॉम्प्लिकेशंस कम होते गए व्हेन वी ट्रीटेड ओबेसिटी. So by word of mouth, it spread to the city, and I had lots of clients coming to me, not just from this place, and also from bigger cities. जो जिसके जो रिश्तेदार थे, because it goes by word of mouth, ना. Word of mouth, yes. तो हाँ, तो बहुत लोगों को they not only transform their body. Whenever they came to me, they said, "Ma'am, आपके साथ तो it's our personality also changes. There's something change in the way we think now, the way we perceive things." And also in my practice, in fact, I was the speaker in the International Obesity Congress. उसमें मैं nutrition के बारे में से ज़्यादा मैंने nutritional counseling, the counseling around giving the diets, उसका कितना इम्पोर्टेंस है टू कॉम्बैट ओबेसिटी, उसके बारे में मैंने बात किया था, विच वॉज वेरी वेल अप्रिशिएटेड बिकॉज इट इज अ होलिस्टिक अप्रोच. It's just not the food we eat, because diet is what we see, what we hear, what we perceive, and how we conceive each information that we have. So इन सबका अपनी पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, और हमारा our relationship with food has an impact on that. So I realized it's beyond just nutrition. Then nutri-habs, so the very fact, nutrition and rehab, whatever phase you are in, physical, mental, emotional, whatever status you are in, you can get better, by working on your mindset, by taking care of yourself holistically. So when that thing came, so I made this brand Nutri-Habs, jahan pe, like, then I went on to learn life coach, then psychological counseling में मैंने diploma किया, so that I could help people with these signs as well. So that is how now it is a holistic approach towards nutrition. It is mind, body, and soul. Lovely. Again, Chaya, listening to you, there was a bulb on moment for me when you said that it is so important for you to take care of yourself, because if you don't take care of yourself, you'll not be able to serve others, right? And in India, especially we women, we've been conditioned to go on serving others without first, taking care of ourselves. So I totally yeah. agree with you, because I think in that 2.5, approximately 3 years of being a homemaker exclusively, I experienced all of these things, because I realized the day I fell ill, खाना कुछ भी बन रहा है या कोई, like, you can't take care of yourself or anyone else the way you used to. One thing that really clicked me was, I need to be healthy. I need to take care of myself so that I can take care of everyone else. So I think somewhere in our culture, we are conditioned in a way that, the moment you feel you have to take care of yourself, you feel guilty yourself. Societal condition bolo ya jo bhi hai, it feels like, in fact, a lot of women client I treat, they come with guilt. अरे मैं कैसे पहले खा लूं? I always say पहले आप खा लो so that you can take care of everyone else. And it is आपका पेट something रहेगा, very, if you're happy, you will keep others happy. yes, Chaya, it is something very common in so many of our households, The lady will wait for the husband and, only eat till late, even when she's not well. So I really wonder what's the harm in eating on time. Yeah, see, that is again, as I told you, condition, क्योंकि हमारी अलग, beyond a point, हर एक की अलग अलग रूटीन होती है ना. For a lady who's got up at 5:30 in the morning, फिर आप 12-1 बजे तक वेट कर रहे हो कि सबका नाश्ता हो जाए तब आप खाओ, then what is going to happen to your body? You're just burning out, right? So ये सारी चीजें ना, it has an impact on the way you behave, the way the quality of food you eat, it impacts. And overall, ये करते करते आपके बॉडी में फर्क पड़ता है, because you're not having a very healthy routine throughout for a longer period of time. It affects your physical, mental, and emotional well-being. Yeah, and I guess it comes out in a blast suddenly, maybe in terms of your emotions or your health. It suddenly comes out one day when you're not taking care of yourself. Correct. So that is why, like at some point, I wrote it somewhere, a moment of pause can lead to a cause. Wow. Can you say that again? A moment of pause, because
we are just, there's so much happening inside our head, inner voice, ye, wo, opinions, being judged, everything. You just have to pause for a moment and see what really you need, what really everyone else want. Then, there's a cause. Then you'll start changing. It's all in the mind. It's all in the mind, what you want, how you want to be, क्योंकि होता क्या है, हम लोग अक्सर सोचते कुछ है, we feel something else and do something else. There's no synchronization. Yes. It is very, So very then there is important to more be aligned. confusion. When there is no synchronization, there's confusion. And when there's confusion, nobody will be happy. True. Beautiful, Chaya. And one last thing I would want to ask, that even after like establishing yourself so well as a nutritionist, you did not stop there. You went on to understand more about the mind and also became a mindset coach. So could you just tell us about this journey of yours? As I told you, Vishaka, when I made this brand NutriHabs, one thing for sure I knew is, a lot of people needed help holistically. When I say that, they used to come to me to understand the food science कि क्या nutrition लेना चाहिए, but उनको nourishment mind के लिए चाहिए था, उनको emotion के लिए चाहिए था, all and the mindset, कि I cannot do this, या how can I do that, for that matter, सोचो अगर मैं ये सोचती how can I do my masters, क्योंकि फिर मुझे टाइम ही नहीं मिलेगा किसी और के लिए, but then I communicated in the family कि मुझे ये करना है, I want to do it. Maybe initially they were not too enthusiastic about it, but they didn't even say no. मना भी नहीं किया, because it is up to you ना कि भाई how well are you going to manage. Yes. So there's so much to do with the mindset, because whatever we are is what we choose each day to do. So I started helping women, especially the women folk, because if you treat the women in the family, the entire family is healthy. Yeah, so when you're treating one woman, you're not just treating that one person, but the entire family. Yes, the entire family. True. So I went on, and as I told you, I learned, did a diploma in psychological counseling, and I went and trained myself with a life coach. And then, like abhi, we work together, counseling bhi hoti hai, like nutritional plans bhi milta hai. So that is how it is holistic, because ये खाओ खाना ये बोलना आसान है, but for you to do that, what is that I have to convey to you? Why should you do that? जब तक ये clear नहीं होती ना, हम और आप नहीं कर पाएंगे. So that is where the mindset comes into play. Awesome, Chaya. We could just go on and on like this. I'm just really enjoying listening to you, but we'll have to look at the time. And I would like to ask you that if you had to give one message to our viewers, what would that be? Vishaka, honestly, I feel we have one life, and at least at present, तो यही है. Whatever our belief system is about different lives या multi lives, whatever, इस समय तो एक लाइफ है हमारे पास और एक बॉडी है. Don't take it for granted. उसका कदर करना बहुत जरूरी है. It's just not your moral right. It is your moral responsibility to take care of your body, give it its due, take care of your life, because when you are happy, you will keep everyone else happy. है ना? इसके लिए don't have a second thought. You can be selfish to be selfless, as one of my mentors say. Selfish to be selfless. Yes, beautiful. Yes. So your journey has been really very inspiring, Chaya. I mean, the way you left the city life and your job to come to a small town where you didn't know what life would have in store for you. Then you managed to take care of your family, and after that you also once again created an identity for yourself to serve others in the society, which is commendable, Chaya. Very, very nice. I am sure that the viewers learned a lot from this conversation of ours. You truly are soul empowered, Chaya, and I would just like to say a few lines for you. Yeah, Vishaka, thank you so much, and please go ahead. So it goes like this. The faint call of her soul made her pause. She lent it an ear. It gave her wings to fly. It gave her wings to fly. You are soul empowered, Chaya. Congratulations to you, and more power to you.
This is massive. I think I could not have got a better compliment than this. Thank you so much, Vishaka, for having me on and for having this conversation and for the beautiful lines you gave for me. And I will just It note was them a down. pleasure. Let's have our signature picture, Chaya. Yeah, Just sure. sending love to This everybody way? around. Yeah. Thank you. Thank you. So it was a pleasure to have Chaya Mishra with us and मुझे यकीन है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा. So we end this session here. Till then, till the next session, namaste and have a good time. Thank you very much. Thank you.